latest updates, subscribe to News 9. Today, India celebrates its 74th Independence Day. However, due to the COVID-19 pandemic, the celebrations were limited across the country. Prime Minister Narendra Modi, on his Independence Day address, highlighted the importance of Atmanirbhar Bharat. Prime Minister Modi praised the fellow countrymen for manufacturing N95 masks and PPE kits. भारत के लिए लाखों चुनौतियां हैं और जब विश्व स्पर्धा के मोड़ में हो तब तो चुनौतियां बढ़ भी जाती हैं, लेकिन देश के सामने अगर लाखों चुनौतियां हैं तो देश के पास करोड़ों समाधान देने वाले शक्ति भी है, मेरे देशवासी भी हैं जो समाधान का सामर्थ्य देते हैं. The celebrations at the Red Fort were very limited, with heightened security around the venue. The cultural programs and school celebrations were cancelled due to the pandemic. कोरोना के संकट काल में हमने देखा कि बहुत सी चीजों के लिए हम कठिनाइयों में हैं, हमें दुनिया से लाना है, दुनिया दे नहीं पा रही. हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के उद्यमियों ने, हमारे देश के उद्योग जगत के लोगों ने बिड़ा उठा लिया. जिस देश में N95 नहीं बनता था बनने लगे, पीपीई नहीं बनता था बनने लग गए, वेंटिलेटर नहीं बनता था बनने लग गए. देश की आवश्यकताओं की तो पूर्ति हुई, लेकिन दुनिया में एक्सपोर्ट करने की हमारी ताकत बन गई. दुनिया की जरूरत थी आत्मनिर्भर भारत दुनिया को कैसे मदद कर सकता है, आज हम इसमें देख सकते हैं. In the national capital, celebrations were kept low-key. Cadres from the Congress party, including Rahul Gandhi, gathered at the Congress office to hoist the national flag. Home Minister Amit Shah hoisted the national flag at his residence in the national capital. Indian soldiers deployed at the line of actual control in Ladakh celebrated the country's 74th Independence Day by conducting a march and raising slogans of Bharat Mata Ki Jai. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. In the Atari Wagah border, the Director General of the Border Security Force hoisted the flag and celebrated with the Jawans. In Kashmir, Srinagar, the new Lieutenant Governor Manoj Sinha hoisted the tricolour in a low-key ceremony. In the financial capital, the Chief Minister Uddhav Thackeray hoisted the national flag with very little attendance. In the Union Territory of Puducherry, Chief Minister V. Narayanasamy hoisted the tricolour and received the Guard of Honour. In Bengaluru, Chief Minister B.S. Yediyurappa hoisted the Indian flag. The ceremony also had a police parade. In the capital of Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath hoisted the tricolour with minimum attendees. In Haryana, Chief Minister Manohar Lal Khattar hoisted the tricolour to commemorate the Independence Day.